Dear students, my name is Dr. Kulsum Akhtar and I will be teaching you a course on non-parametric statistics. Non-parametric statistics is one of the important branch of statistics. Before going into the introduction of the non-parametric statistics, dear students, I would like to tell you that what are the non-parametric statistical procedures and how these procedures are different from parametric procedures. In statistics, we have two kinds of statistics. One are known as descriptive statistics and other are known as inferential statistics. How they are going to be different from each other? In descriptive statistics, we usually collect the data and summarize the data. Whereas in inferential statistics, we use the facts and figures that we have collected in descriptive statistics, and then we are going to infer the conclusions out of that data about certain population parameter. Now, when I've said it involves certain kind of population parameter, then if we are going to test any assumption about the population parameter, that will be done through parametric statistics. So parametric statistics are the procedures which involves the population parameter, and we need to test certain assumptions about them. Whereas the non-parametric procedures are the one which do not have any sort of parameters. So what we are going to do in case of parametric statistics, the parameter of interest that must satisfy certain kind of assumptions, such as when we apply t-test for testing the population mean, there is that assumption that the data must be drawn from the normal distribution. Whereas what if we have a data set where this assumption is not met? So then in that case, we would be requiring certain alternative procedure. And then we are going to use the non-parametric procedures for that matter. Because sometimes the results are needed in a hurry and the computers are not readily available to us. So in that case, we would be requiring the non-parametric procedures. But my dear students, in order to test the hypothesis where the population parameter is not involved, the measurement scale, if in any case it is weaker, we can cater it through non-parametric procedures. Whereas in parametric procedures, we require that the variables are to be measured at least on interval or ratio scale of measurement. Now, what are these ratio and interval scales of measurement? Before understanding these concepts, I would be telling you that what is the measurement. Measurement is the integral part of modern science. It basically deals with assignment of numbers to certain objects or things. Now, these measurements are to be done in various kind of disciplines such as science, commerce, mathematics, and statistics, among others. Despite its importance, there is little consensus among philosophers that what is to be measured and what is not to be measured. My dear students, measurement, as I've told you, it is simply the assignment of numbers to the objects or to the things. Now, what is then type of unit? Whenever we measure a variable, we take into account the concept of type of unit. Measurement scales are used to quantify the variables. So students, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेजर की जा सकती हैं, and there are certain things which we cannot measure, such as if we talk about height variable, it is to be measured. And how it can be measured? There is a measuring tape through which you can measure your height. Similarly,
If we talk about weight variable, we can have weighing scale through which we can measure the weight of an individual, and we can also measure the length of an object. Now, my dear students, then what are the phenomena which we may not measure? Such as if we just talk about happiness, happiness को हम measure नहीं कर सकते या partially measure करते हैं. इमोशंस की अगर हम बात करें, ह्यूमन इमोशंस, अगर हम बात करें ह्यूमन फीलिंग्स, तो हम उनको पार्शली मेजर कर सकते हैं. सो साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली हम इन्हें मेजर तो ज़रूर करते हैं, लेकिन पार्शली मेजर कर सकते हैं. अब जहाँ तक यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात है, मैंने आपको एग्जांपल दी हाइट की, वेट की, लेंथ की. हाइट को मेजर करने के लिए जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इंचेस और सेंटीमीटर्स में हम मेजर करते हैं. वेट को मेजर करने के लिए हम पाउंड्स या किलोग्राम्स को यूज़ करते हैं. तो जब भी हम कोई वेरिएबल मेजर करेंगे, उसके साथ हम जिस चीज़ का ख्याल रखेंगे वो है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अब मैं स्टूडेंट्स आपको कुछ एग्जांपल दूंगी रियल लाइफ वेरिएबल्स की जिनको हम मेजर करना चाहेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम जेंडर की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं. वन आर कॉल्ड एज क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एंड अदर आर क्वांटिटेटिव. सो ये जो जेंडर वेरिएबल है, ये क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल वेरिएबल है. इसको मैं कैटेगोरिकल वेरिएबल क्यों कह रही हूँ? बिकॉज इसकी दो कैटेगरीज हैं, पॉसिबल मेल एंड फीमेल. इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लूँगी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस. अब इसकी तीन कैटेगरीज यहाँ आपको नज़र आ रही हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड देन अपर क्लास. अब थोड़ा सा ये डिफरेंट है जेंडर वेरिएबल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से. जेंडर वेरिएबल में आपने देखा कि दो कैटेगरीज थी, मेल एंड फीमेल, और उसमें ऐसा कोई ऑर्डर नज़र नहीं आया आपको, जबकि इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में एक ऑर्डर नज़र आ रहा है कैटेगरीज में. लो क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर अपर क्लास आ रही है. अब अगर मैं नेक्स्ट वेरिएबल जो एग्जांपल लेने जा रही हूँ, आईक्यू लेवल. आईक्यू लेवल जब आप मेजर करते हैं तो हर इंडिविजुअल का एक स्कोर आता है. अब ये वेरिएबल जो है, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम जेंडर एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जहाँ पे कैटेगरीज तो नहीं है लेकिन एक्चुअल क्वांटिफिकेशन है ऑफ द स्कोर्स. इसी तरह से अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को भी हम मेजर कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स जो हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि स्टैटिस्टिक्स में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स बीइंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. तो उनकी टाइप के अकॉर्डिंगली हमें मेजरमेंट स्केल्स डिज़ायर्ड होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका वेरिएबल क्वालिटेटिव है तो उसको आप मेजर करते हैं डिफरेंट स्केल से, और क्वांटिटेटिव है तो उसके लिए डिफरेंट स्केल्स हैं. अब मैं यहाँ 4 स्केल्स की बात कर रही हूँ, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल्स. नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल्स हम मेजर करते हैं क्वालिटेटिव डाटा को, इन दो के थ्रू मेजर करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव डाटा जो है उसको हम मेजर करते हैं इंटरवल या रेशो स्केल से. सो स्टूडेंट्स, हमने इस मॉड्यूल में सीखा कि कैसे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में हम एक डिफरेंस एनालाइज किया हमने. उसके बाद हमने देखा कि मेजरमेंट क्या होती है, क्यों वेरिएबल्स को मेजर करना ज़रूरी है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, और मेजरमेंट स्केल्स क्या होते हैं, और किस तरह से स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा सेट्स के लिए हमारे पास डिफरेंट मेजरमेंट स्केल्स हैं जिनके थ्रू हम अपने डाटा को मेजर करते हैं.